required? What is the need of JavaScript? Can we replace JavaScript with other programming language? All those things we'll discuss in detail today. So before going ahead, so like you guys learned JavaScript related functions and everything, right, in the basic manner. That is why I think this revision session has been scheduled for us. So what is the JavaScript and why we require the JavaScript? Does anyone know? Okay, you guys know the basics only. Okay, let me clear it out. What is the JavaScript and why we needed the JavaScript as a programming language, and why we chose JavaScript as a language for our stack development course or full stack development course. See, JavaScript is comfortable with the front end also, back end also. That is the one importance comes with the JavaScript. If we are trying to build any application on top of the front end or back end, so JavaScript have their own frameworks for the backend also, and they have the libraries for the front end, which is running on the JavaScript. That is the base of the full stack development. If you are working as a Python, as a Java, as a backend, then for learning the front end, you need to learn the JavaScript separately. Then your stack will be completed as a full stack. So in case of in those comparison, we do have the JavaScript which we can use for the front end also, and we can use it for the back end also. Now, what is the front end and what is the back end? See, front end means what? What we can see on our web page, that is something front end. Let me share my screen. Let me open any website, Amazon, any of the website. See, front end means what? This is what we are going to see here. That is something built in the front end with the help of the HTML, CSS, JavaScript. They are using this for building this front end. Now, how the JavaScript plays here a major role. See, suppose this is my login form of the Amazon.com. I just added my email ID here. This is what I look like. That is something front end. Now, how backend will work? If I do inspect here, you can see under the network tab here our backend APIs is getting called. Let me click on the continue. If I will enter some password here. So whenever I'm clicking on the sign in button, so whatever the data I have entered here, that is my email ID and my password. So it is JavaScript, right? JavaScripts have their responsibility to take those variable with the help of the DOM and pass those data to my backend API with the help of the Ajax and all. That will be we will see in the upcoming sessions whenever we are going to schedule. But right now we should know what is the front end, what is the backend. That is why I'm just giving you one overview of the Amazon.com. See, once I clicked on the sign in button, you can see one API is getting called here. That is something called as a sign in API. So sign in API, this is something backend. You can see this is my backend URL. This is my sign in API. And user ID password, which I have entered here. My password is wrong. That's why it is coming password like this. So you can see under the payload here, this JavaScript is passing my email ID and my password, encrypted password they are passing here. And from the backend, I'm getting a response. There is a problem. Your password is incorrect. And then what JavaScript is doing simply with the help of the DOM, they just pick this message and they are showing that message over here on the front end. So that is the importance of the JavaScript. See, without JavaScript, your websites are the static only. These are not dynamic website we can call. See, if JavaScript is not there, then we are not able to pull the records which is entered by the user. Now user is entering here username and his password. We needed those records for the validation purpose, right? If that user is valid or not. So those passwords and email ID which we have, we will check those passwords and email ID and we will verify them once again. If user is valid, then we will allow him to enter in our web application. So behind everything, DOM manipulation, we can say, or passing the data, injecting the data. For that, we needed a JavaScript. That is why we chose JavaScript as a stack to our one stack development course. So that is the importance of the JavaScript. Clear everyone why we chose the JavaScript as a stack? Anyone have any doubt under this? Why we chose JavaScript as our full stack development stack and all? No doubt. Clear everyone? Great. So that is why we chose JavaScript as a I mean like
front end and back end language. Okay. So now let's go ahead under the JavaScript. Can anyone tell me uh, explain in Hindi and English both? So which language is comfortable for you guys, Hindi or English? Okay, some of them, both of them fixed Hindi. Okay, we'll keep mixed pattern. That is not a problem. Okay, we'll keep mix one. Okay, fine. See, so why we needed I mean why we needed the JavaScript as we discussed, we needed JavaScript in both of the cases for the front end also and for the back end also. Can anyone tell me how many concepts you guys are clear about the JavaScript? What do you learn in the JavaScript? Or whole topics and whole syllabus got covered for you guys? How it is? How it is? My question is, देखो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों ने कहाँ तक जावास्क्रिप्ट पढ़ा है होल सिलेबस कवर हो चुका है ओके वही चाहिए मुझे ठीक है होल सिलेबस कवर है fine then we'll go ahead whole syllabus has been covered no problem see what is the javascript and how does it will work so javascript as we know it is a scripting language for the web application so how it will work it is interrupt language, which means it do not needed any translator or compiler like C and C++. JavaScript run directly on the web browser, right? That is one advantage of the JavaScript. That is why for the front end we needed a JavaScript only. We cannot use Java, Python, this kind of the languages for integrating the data in the front end. That is main importance of the JavaScript. So apart from that, you can see JavaScript work with the HTML, CSS. To build the web pages, JavaScript is supported in most of the modern web browser, Chrome, Firefox, Safari, as we know all those browsers. Now, how the DOM will work? See, this is how DOM they have explained here. One example with the help of the DOM. So DOM means what? See, there this is our DOM. So this is our HTML page, right? So what will happen? It will parse my HTML page first, and it will showcase the data in the DOM. Then this is my JavaScript engine here. So whenever I am trying to do any operation on my web page, see, suppose this is my JavaScript engine. I just clicked on one button, and that one button will open one paragraph, or it will open one div block. Any kind of the data it will open once I am clicking on any button. So once I clicked on that button, it will load my web page. You can see like this. So this is my web page. So whatever data we do have, HTML data, this is my web browser. Web browser, what it will do, it will parse all those HTML data. Then it will rearrange the data in the DOM. So whenever with the help of the JavaScript, whenever I'm trying to perform any kind of the operation, any kind of the data manipulation, all those data will go through the DOM only. See, you can JavaScript engine is communicating in both way to the DOM insert and update. In both of the cases, it is enabling. Let me open that option for you guys. Okay, I think you are able to unmute now. So this is where DOM will work. So what is JavaScript used for? So JavaScript is mainly used for the web application, web browser, as we know, but JavaScript is also used to behind the softwares, servers which are embedded under the control. So as I mentioned, not only for the web application, see, JavaScript will be used for the front end, as we know, like for the manipulation DOM and everything we needed JavaScript. That is one advantage of the JavaScript. JavaScript comes with the different features. We can say event handling, event listeners. All those features are there. With the help of them, we can easily design
and make our page dynamic. That is the one advantage. Apart from that, also for the backend, as I mentioned, JavaScript have different frameworks. That is Node.js, Express.js, Happy.js. This kind of the frameworks we do have in the backend to write our APIs. That is one use case of the JavaScript. Apart from that, whenever we are dealing with the AWS cloud or any other cloud, at that time we need to write some Lambda functions and all those things. So over there also JavaScript is a very useful programming language. So that is how in in the AWS level also, front end level also, back end level also, we can use the JavaScript very smoothly. That is one advantage come with the JavaScript. Adding interactive behavior to the web page. So JavaScript allows user to interact with the web page. That is almost no limit things you can do with the JavaScript on the web page. There are only few examples they have given here. Show or hide the information, as we know how to hide the information, how to show the information, change the color of the button or the mouse, zooming in, zooming out. So all these are all the events which is coming inbuilt with the JavaScript. So let's take one example. It will be more clear how the DOM will work and everything. Suppose this is my terminal. Let me create here one file. It is index.html file. So what you guys have to learn only DOM manipulation, how the DOM will get manipulated with the help of the JavaScript. Let me take one doc type. This is my normal HTML tag. I will add it here title. So title can be any login page like this. I will create. Let me add a body tag here. So you can see under this body tag, let me add a label first. Label is username. This is my label. Let me take here input tag. So in this input tag, I will take input as the email. So let me add here ID for this is the email. Let me add here one placeholder. Enter your mail ID. Up to this clear what I did, I just created a simple, I am trying to create a simple login page. One HTML I have given here, title I have given under the body input type email ID equal to email. That's it. Let me add once again a BR tag here. Let me give one more label that is for the password. Let me copy the same line here. So now in my input type will be the password. ID will be also password. Enter your password. Now let me create one button here. That is something login button. On click of this button, we will call one function. That is check user. Check user is my function. Up to this clear? Does anyone have any doubt in this example what we did? See, I'm just trying to create one login page. Simple HTML code I have written here. I hope you guys learned the HTML and everything. That is why I directly wrote the code here. Let me Yes, run. sir. So you can see this is my page, simple username, password, and everything. Let me add one more line break here. Now, thing is that we are going to focus on DOM manipulation. That is our main goal. See, once you understood DOM manipulation, how to take the data from the username, password, and how to pass that data to the backend. This is how Amazon is doing. They are also taking data from the user. When on click of the sign in, they are passing that data to the backend. So that is what we are going to do here. So we don't have the API. So what we will do, we will console log our data here on the console, whatever data we are getting from here. See how to do the console log and everything. Does anyone know what is the method under the DOM manipulation?
do we have, with the help of that, we can add the data under the script tag. See, whatever the data, I mean, whatever the data user is going to enter here, email ID and password. So all those data on click of the login, right? On click of the login, I needed the data in this JavaScript function. That is something check user function. How to do that? Does anyone have any idea? You guys learned, right? Whole JavaScript, no manipulation and everything. Yes, sir, we will create a function named check user. Okay, let me do that. So function I have created here, check user. Okay, after that, what I need to do? See, I needed this email and password which user is going to enter. I simply needed this data. So what to do? How I will get the data in this check user? Now let me do the one console log here. So this console log is simple in the check user function. See, let me go here. Let me reload. If I clicked on this, you can see it is coming like in the check user function. So we are in that function after clicking on this login button. But see, if I'm going to enter email ID here, I am going to enter some random password here. If I clicked on the login button, that data also I wanted here in this check user function. How I will get that data? Any idea? No, sir. No idea? email जो sir जो Yes. create करके उसको variable Your voice is not clear. Yeah. Sir, can we use here event listener, something like that? Yeah, we can use event listener also, or else we can directly use on click also. Two methods for doing that. So we chose one method, that is on click. So see what event listener is doing. It will listen the event, right? Once you clicked on the login button, it will listen that and it will execute that function. Correct. That is what event listener do. And on click is also doing the same thing. On click means what? Once you clicked on that button, that function is getting called. So that is first stage we crossed. That is calling the function. Second stage is that what is the data user is going to enter in the form, that data we needed. Pass that data to the backend. You got my question? Ah, yes, sir. I'm getting that. first you have to assign some id to your id to the type ID we already assigned here, right? ID password, ID email. Okay, I will tell you how to do that. See, ID is unique, right? Input. You can see, listen very carefully. Once you understood this now, how to get the data which is user is going to enter from the front end. Once you understand so how here we you can write a collect that sentence data. like get data by id Get data, not data. Get element get by right. That method we can use here. So I will add it here. Const email equal to. See, and if you learned in the Java, I mean in JavaScript DOM, there is a method that is something document dot get element by ID. Simple. Here I will add what is the ID for the email. I have added here ID. I mean ID as the email. I Email. will email. So from this, what I needed a value which is entered by the user. I will add it here value. Simple. So now this const email, I will get the data which is I will get the email user's email ID simply. So one more variable I needed, that is password. Password. Yeah, under the password also I will make it document dot get element by ID. Here I will pass password as a ID. See here I passed ID as a password, right? That is why I take it password. Ah, yes. Here also Got I will value. add as a Hmm. value. So now let's do the console log. Is I am able to see the records or not, right? That is our main job. We needed the record which is Record. entered by the user. Simple. Hmm. See, now let me go back here, reload everything. I've added email ID, so password, which is I will add random. If I click on the login button, you can see data is coming here. Email is this email ID, and I entered this password. So this is the how you just what is the front end? Now see, front end is very easy. You just need to create the form. On click of something, you just needed the data which is entered by the user. Simple. Once you understood this now, how to get the data which is entered by the user, then like front end is almost done. DOM is important part here. Yes, sir. We got this.
You got this, okay? And everyone got this? Doesn't even have any doubt. No doubt. Great. We can Oh, use any other yes. thing rather than this get element by ID. Yeah, we can use. There are multiple methods. See, get element by class name. There is there. Query selector is there, right? But generally, we prefer ID because ID is unique for each and every element. So we can show indicate uniqueness here for that particular input field. So it depends on your requirement. Which should you prefer? Like query selector is there. Document dot get by class name is there. This kind of the methods are there. I will show you how many methods are present. You can say document dot. If I do here get only, you can see get element by ID, get element by class name, get element by name, tag name. These kind of the methods are available here. But I mean, 90% we should choose get element by ID only because see, ID is no ID is different, unique for each and every input field. So it will not create any conflicts in your code later on. Yes, sir. From the HTML form, we tried to collect the data that we did. Can we insert some data from JavaScript to the HTML? Can we do that? Can we do that? See, Can do suppose. that. How to do that? Let me take here one paragraph. So I will add it ID as a para. Okay. This is my empty paragraph. You can see my page. Paragraph is empty over here. If I click on the login button, see email ID password will come empty because I didn't added anything over here. So now this is my paragraph tag. So in that paragraph tag, I will write whatever the data I'm getting from the user. That thing we can do. For that also we need a dot get element by ID. And that we need a para dot inner HTML we are going to write. Why inner HTML? Because this is empty paragraph. In that paragraph, we are going to write something. That is why I have added here inner HTML. So now what data my username? My username is, let me show you, and password. Sir, repeat this inner HTML part again. Sure. Let just hold on. So what I'm trying to do here, inner HTML means what? See, this is my empty paragraph. See, if I save this, you can see that paragraph is not visible here. Correct? This is somehow empty paragraph. Now, from my JavaScript, I need to write something on my HTML page. For that, we do have the method that is inner HTML, which comes under the DOM only. So in which document I have to write the data? I need to write the data in this paragraph. You can see this empty paragraph. So this empty paragraph, I have given one ID, that is para. So what I will do this paragraph. So this empty paragraph, you can see, I will write some data. So that how to write the data? For that also there is one DOM method, document what get element by ID, that is para. Inner HTML means what? Now you can see this paragraph is empty somehow. In that paragraph, I need to write something. So inner HTML is inbuilt method which is present in the DOM to write the data in that particular front end. So dot inner HTML equal to means I am going to assign some value to this paragraph. My username is, what is my username? This email and this password. If I go back here, reload the page. See, this is my user ID. Let me add some random password. If I clicked on the login button, you can see it is coming here. My username is Onkar and password is this random password which I have entered here. And it is coming here also in the console, and this is coming on the HTML page. So this is how, with the help of the JavaScript DOM, you can perform two-way communication. I mean, from front end, I mean from HTML to the JavaScript function and JavaScript function to the HTML code. It is a two-way binding kind of thing we can do here. Clear everyone Yes, what sir. I did here in this form? Yes, sir. Does anyone It's have clear. any doubt in this DOM and all?
Okay, that is the only thing you have to do. So can anyone tell me like how many types of the function? Sir, repeat your question again. Types of the function. Sir, in normal JavaScript, Mm-hmm. sir, Arrow arrow functions. fun arrow uh, functions, Uh-huh. Normal function. Okay. Normal. ex, Up. and one is function anonymous expression. function. Anonymous. Okay. Apart from that. Higher order function, Okay. callback function, Okay. Then if function. Have you heard if function? What's that? Pardon, No, pardon sir. sir? If function. Double IFE. If. No, no, sir. Oh, No, sir. sir. Immediate No, sir. functions, immediate expression functions. Immediately invoked function, right? So Yes, what yes, is the yes. importance of this anonymous function, if function? Don't know, sir. No idea, sir. No idea. Okay. Let me open one JavaScript compiler. See, types of the function is, very important interview perspective question. What is the anonymous function? What is the if Sir, function? the function Mhm. which does not have any name is called anonymous function. Correct. Function does not have any name. That is something anonymous. So you can see this function can be anonymous function. Correct. This function don't have any name. Right, Yeah. sir. If I do console log, if I run this code, so is this working? Why it is not printing then? If this function don't have any name, then how to call that function? Only You can uh, use one. asynchronous that function inside that function. Let's Sir, set you have to timeout, use then it As, will work, I think. after parentheses. passing, sir, after passing the argument, Passing, we can pass. passing. What we needed? Like set We timeout, we can can use in that function. Then it will, I think, work in set we timeout. can pass this anonymous function inside a argument. So Right. after that we can call that particular argument. So it was called. That is one way. Apart from that, we don't have any other way to call this function. Sir, use another parenthesis for that. Correct. We needed one more parenthesis at the end. So see, this is anonymous function. Once I added one parenthesis here. So what this parenthesis, mean? What does it mean? This parenthesis? It will Calling a ask my function. function Calling call it functions. immediately. So that is Yes. why we call it like if function. Immediately invoked function. So clear what is difference between anonymous function and if function? Sir, Yes, sir. why are you using parenthesis in the starting? Means whole If thing I am inside not using parenthesis. parenthesis in the starting, then what will happen? Can anyone guess? If I am not using anything, if I try to run this code, it will throw an error, right? That function. For what is this? I mean, syntax of creating the function. First function keyword, after that function name, right? That is the syntax of the creating the function. But Yeah. in case of the anonymous function, we don't have a name for that function. That is why they come with the syntax, right? Parenthesis simply here. So that is anonymous function, but we cannot call that function like this, right? For calling that function, we needed parenthesis here like this. Then it will get called. Yes, sir. Got it. इसका एडवांटेज क्या होगा सर? एडवांटेज Sorry. इसका एडवांटेज क्या होगा सर? एनोनिमस करने का? फंक्शन सी हाँ इसका Yes. एडवांटेज ये है ना, देखो अभी आप ऐसा ऐसा कोड लिख रहे हो ना जेएस फाइल, तो उस जेएस फाइल में अगर ऐसी केस आती है, आपने एक फंक्शन लिखा और वो फाइल लोड, एज सुन एज वो फाइल लोड होगी ना आपकी वेब पेज पे, as- वो फंक्शन इमीडिएटली कॉल होना जाना चाहिए। जब भी आपकी फाइल कॉल होगी, वो फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाना चाहिए विदाउट क्लिक ऑन एनी बटन और लाइक दैट, Okay. ऑटोमेटिकली कॉल हो जाना चाहिए। तो उस टाइम अपने को इफ फंक्शन लगेगा। नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना पड़ता है बराबर, एक फंक्शन कॉल नेम लेके वगैरह। तो इसको कैसा है, जैसे बना दिया फटक से कॉल कर दो, बात खत्म। इसलिए फेमस है थोड़ा इफी। बराबर सर। एज अ कंस्ट्रक्टर भी तो आप कॉल कर सकते हैं ना किसी को भी।
कंस्ट्रक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करना पड़ेगा ना उसको फिर। सर कंस्ट्रक्टर में अगर कोई मेथड्स वगैरह जो डिफाइन होता है वो तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट हो तो। हाँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा राइट उसका, फिर वो कॉल होगा। यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करना है, फंक्शन लिख दो छोड़ दो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके। दैट इज द वन एडवांटेज। सो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा क्वेश्चन, ये मतलब तैयारी करो इसका, एनोनिमस वगैरह सब। Sir, फिर repeat the सर क्वेश्चन advantages one more time. किसका, ये एनोनिमस का? Yes, sir. देखो एनोनिमस फंक्शन का एडवांटेज ऐसा है ना, जैसे आपने फंक्शन लिखा राइट जेएस फाइल में, आपकी वो फाइल रन हो रही है किसी वेब ब्राउजर पे, आपको फंक्शन इमीडिएटली कॉल करना है, जब जहाँ जहाँ पर आपने कोड लिखा, लिखने के बाद वो फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाना चाहिए ऑन लोड ऑफ द पेज। तो उस टाइम आप उसको इफ फंक्शन लिख सकते हो। किसी ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वो फंक्शन कॉल करने के लिए। इन शॉर्ट, जैसे पेज लोड होगा कॉल हो जाना चाहिए वो डायरेक्टली। तो Okay, ये sir. उसका एडवांटेज है एनोनिमस। उसके बाद क्या है यहाँ पे, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर? See, we know why JavaScript is used for creating web app and mobile app. Developer can use various JavaScript app framework for developing and building web and mobile apps, building web server and developing server application, game development. So this is something use case of the JavaScript. So might be interviewer will ask you why, what is JavaScript used for? Your answer should be creating a web application, mobile application, creating a web servers, for scripting the server, game development, app development. Everywhere we can use the JavaScript. Sir, but in heavy computation tasks, Mhm. JS will, I think, it may fail, right? Right. In the heavy computational, it will not get failed, but it will take a longer time. See, what is the Node.js is asynchronous language, right? Yeah. Asynchronous means it will never wait for Yes. anyone. So it will keep executing the upcoming functions or upcoming part, whatever we have. So in that case, we are using the Node.js over there. So what problem will happen with that? If some computational task, like it is taking 1 minute, 2 minutes to execute the task and all. So at that time, JavaScript is not that much helpful over there. So people are avoiding to do that. So these kind of the application is a very rare application. We can say 3%, 4% kind of application they are, right? Very, very rare application. But in most of, apart from that is 95% JavaScript is good fit over there. Okay. In big company, MNC or product based, JavaScript is used for development or not? Yeah, they are using JavaScript right now. See, what is Node.js, JavaScript, these are open source language, correct? Yeah. What is meant by open source? Means we can use, anyone can use without paying something, site or something. Correct. Without paying any money to that JavaScript community, we can use this JavaScript. That is Mm. we call open source. But if I talk about the Java programming language, .NET programming language, they have their frameworks, right? But Yes. for using their some services, they are paying. Many companies are paying them to Java community or their .NET community. They, big MNCs and product companies, they are paying lot of money to them for using their services. So they are not open source. And JavaScript Node.js comes under the open source. We no need to pay any single rupee to JavaScript community. That is why major companies are switching on the JavaScript for their upcoming project. Okay. That is advantage which we have on the JavaScript. They are paying lot of money. You cannot imagine, even you cannot imagine that much money they are paying to this community. Obviously, they will save their cost by switching on the JavaScript, Python, this kind of the open source languages. Yes. So JavaScript is single-threaded, non-blocking, asynchronous, concurrent programming language. So what is different between this synchronous and asynchronous? That synchronous operation means that particular means it will perform the execution of code line by line, and Mhm. asynchronous means
Uh, means Means it will run parallelly. It will not wait or something. That is something asynchronous, correct? Yeah, But by default, Node.js is asynchronous, correct? Then yes. how we are handling this synchronous task over there? by default, it is synchronous, but we make as asynchronous. No, I'm talking about the Node.js. Node.js, have you guys learned? Yeah, Yes, yeah. sir. Asynchronous. Yes, sir. Node is synchronous or asynchronous by default? Asynchronous. Asynchronous. By default. Asynchronous. Correct. It is Asynchronous. asynchronous. Then how you are handling synchronous tasks over there? Sir. Using promises and new ES6 version like async await and Correct. With the help of them, we are making it asynchronous. Correct. So that is how interviewer will ask you question. See, interviewer will never ask you what is async await. He will ask you how to make Node.js synchronous. I think using Axios also we can develop API. So that Axios we can use for calling the APIs, right? But whenever we need to suppose there is one scenario, we need to fetch some data from the database. So that query will take some of milliseconds to get the data. But as we know, Node.js is asynchronous. It will never wait for any millisecond to get the data. It will jump on the next line. So at that time, we should stop our execution to get that data. Correct. At that time, we cannot use that Axios wala part. Hello, sir. Yes. Sir. Hello. Yes. Go ahead. I can hear you. सर आपने क्या कहा जावास्क्रिप्ट asynchronous है Node.js, I said. वो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट क्या है आप बताओ. सर मेरे हिसाब से तो सिंक्रोनस है. हाँ, सो जावास्क्रिप्ट क्या है ना, एक सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों है उसमें, ठीक है, बेस्ड ऑन द whatever task we are going to perform. That is how JavaScript is built on. लेकिन Node.js ये पूछे कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या सिंक्रोनस कोई इफ एल्स ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप लोगों को आवाज सुनाई दे सर रही मैं है? कह रहा हूँ कि यस और नो में आंसर देना है सिंक्रोनस है. तो यस और नो में देना है तो आप सिंक्रोनस बोल सकते हो, बट आपको एक बात बताता हूँ मैं, हर एक इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव क्या है ना, कुछ लोग समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, कुछ समझते हैं असिंक्रोनस है, लेकिन आइडियली इट इज असिंक्रोनस. आइडियली यू कैन से, अगर आप जो जितने भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना गूगल पे इधर उधर, कहीं पे सिंक्रोनस लिखा हुआ रहेगा, किसी कहीं पे असिंक्रोनस लिखा हुआ रहेगा. तो सर हमें क्या बोलना है, यस बोलना है या नो बोलना है? अगर कोई पूछे सिंक्रोनस है, हाँ, आपको यस बोलना है या नो बोलना है, ठीक है. अगर वो पूछेंगे जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है, तो उस टाइम आप उनको असिंक्रोनस बोल दो. अच्छा सर, ये मतलब कि अपना बिहेवियर चेंज कर देती है, मतलब सिंक्रोनस से असिंक्रोनस हो जाता है ये. उनको क्या बोलने का है ना, बाय डिफॉल्ट see your answer should be like that, JavaScript is asynchronous but it can change its behavior to the synchronous and asynchronous as per the need, as per the requirement which we have. अगर टाइम टेकन वाला कोई कोड है एग्जीक्यूशन में तो ये अपना बिहेवियर चेंज कर देती है. बाय डिफॉल्ट ये सिंक्रोनस है. हाँ, बिहेवियर वो चेंज कर देगी वहाँ. मतलब मेन डेफिनेशन यही आज पता लगी, क्योंकि तभी तो कंफ्यूज हो जाती है कि Node.js भी तो जावास्क्रिप्ट चाहिए. Node.js तो टोटल असिंक्रोनस है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, बट वो सिंक्रोनस का कुछ है ही नहीं सीन वहाँ पे. जावास्क्रिप्ट में भी यही थी, ठीक है. तो दिस इज हाउ उसको भी हैंडल कैसे करोगे आप सिंक्रोनस बिहेवियर को विद द हेल्प ऑफ द async await टाइप और प्रॉमिसेस है. तो अभी चलो, अभी तक तो ये था कि async await वगैरह था अपना, ठीक है. तो उससे पहले क्या था, ये तो नया है ना ये 6 में async await वगैरह. उससे पहले प्रॉमिस था, रिजॉल्व, रिजेक्ट, कॉल बैक फंक्शन. सबसे पहले कॉल बैक था, राइट. अगर कॉल बैक था तो प्रॉमिस की जरूरत क्यों, अगर प्रॉमिस है तो async await की जरूरत क्यों? नेस्टेड कॉल बैक की वजह से कॉल बैक हेल्प जाता था तो कोड को पढ़ने में लिखने में समय मुश्किल होती थी, इस वजह से प्रोमिसेस का यूज करने लगे. प्रोमिसेस कॉल बैक कई कोड को बड़ी इजीली रीडेबल बना देता है, इजी टू मेंटेन, इजी टू रीड. इजी टू मेंटेन, इजी टू रीड, वो प्रॉमिस का हो गया बराबर. प्रोमिसेस के आपको मेथड्स पता है? न्यू प्रॉमिस यूज करते हैं सर. नहीं मेथड्स पूछ रहा हूँ मैं. रिजेक्ट एंड सॉल्व स्टेट्स, वो तो स्टेट है ना, रिजेक्ट रिजल्ट. मेथड्स टाइप्स वी कैन से देन एंड कैच. नो.
मेथड्स और टाइप्स पता है प्रोमिसेस के आप लोगों को? नहीं पता? नहीं सर, वही पता था, स्टेज उसकी 3 है, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। हाँ, वो एक स्टेट्स है, राइट? वो जी दीज आर द सर, स्टेट्स ऑफ द पर प्रोमिस। मेथड के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। मेथड्स है ना, प्रॉमिस एक 4 से 5 मेथड है प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, प्रॉमिस डॉट रेस। आपने सुना है ये नाम कहीं? यस सर, यस सर, ये हाँ सुना सर, है। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. तो दीज आर द मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ द प्रोमिसेस। तो आप बट यूज नहीं ये किए भी थे। थोड़े यूज नहीं किया आप लोगों ने कहीं पे? नहीं, ऑल प्रेमिस Where वगैरह तो you यूज नहीं किए मैंने। basic version is covered. वो AWS में प्रोमिस ही खाली 3 स्टेट थे, वो यूज किया था, बाकी अब ये प्रोमिस हम्म। ऑल वगैरह नहीं, तभी तो माइंड में नहीं आ रहा था कि मेथड कौन से है इसके। ठीक है, तो ये इस पे भी एक बार रिवीजन रखो, क्योंकि अगर इंटरव्यू थोड़ा हार्ड लेवल का हो गया ना, तो यस पूछ सर। सकते हैं आपको ये क्वेश्चन। अगर आप इतना बता दोगे कि प्रॉमिस डॉट ऑल रेस क्या है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल सही रहेगा फिर इंटरव्यू परस्पेक्टिव। ओके सर, तो फोर्थ बताई थी भाई आपने सर। प्रोमिसिफाई को भी सर प्रॉमिस का मेथड बोल सकते हैं क्या? प्रॉमिस प्रोमिस। प्रोमिसिफाई। प्रोमिसिफाई यस। यस। Yes, sir. वो मेथड नहीं है एक्चुअली। वो उसको बस क्या बोलते हैं, उस डॉट कैन डॉट कैच डॉट देन जैसा स्टेट रहता है ना, उसी टाइप का है। मेथड्स आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, नो नो फाइनली सर, और देन कैच की तरह है वो हाँ, प्रोमिसिफाई राइट। सर। करेक्ट करेक्ट, वही बोल रहा हूँ। मेथड्स ओके। और आप लोगों का जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड सब खत्म हो गया क्या? सब खत्म हो गया सर, रिवीजन So हो गया front end जावास्क्रिप्ट। front end नहीं हुआ सर, मतलब मेरा हमारा अच्छी तरह से नहीं हुआ फ्रंट सर। एंड में सारा सर इतना ज्यादा नहीं किए हैं, फ्रंट एंड रिएक्ट थोड़ा बहुत सीखे हैं, ओके सर ओके। और बैकएंड सर पूरा ये हो जो गया। सर ये जो प्रोमिसिफाई की बात कर रहे हैं ये लोग, ये हाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर का ये जो यूटिल यूटिल का होता पैकेज, नोट केस जेएस का, या। हाँ तो इंक्लूड उसका प्रॉमिस। पूछ रहे हैं ये लोग। मतलब अच्छा, वो उसके प्रोमिसिफाई, लाइब्रेरी के अंदर है। राइट राइट राइट, तो वो करता क्या है? सी, वो एक इनबिल्ट है, राइट? नोट जस्ट आपको पता है कितने टाइप्स ऑफ द पैकेजेस है नोट जेएस के अंदर? अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था प्रोमिसिफाई पे। ये बताओ मुझे, हेलो। टाइप्स बताओ पहले, मॉड्यूल्स के टाइप्स बताओ। हेलो। हाँ सर, फिर से रिपीट करेंगे, आपने क्या पूछा? मॉड्यूल्स है ना, टाइप्स ऑफ द मॉड्यूल्स। सी, मॉड्यूल्स मींस npm libraries which you guys are using। सर लोकल उसके भी मॉड्यूल टाइप्स है ना? और Yes, थर्ड sir. पार्टी और कोर Third party and मॉड्यूल्स। all, I think. करेक्ट, Third party लोकल, थर्ड पार्टी एंड कोर मॉड्यूल्स, करेक्ट। core तो module. कोर मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आते हैं? हम्म HTTP, OS, FS, ये सब क्या कोर मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। लोकल मॉड्यूल कैसे बनाना है सबको पता है? यस सर, कैसे? यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, लोकल मॉड्यूल्स बोल रहा हूँ मैं। लोकल मॉड्यूल्स तो सर कोई सा भी फंक्शन वगैरह किसी जस्ट वो फंक्शनैलिटीज। लोकल मॉड्यूल ही होता है। हाँ, तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट यस, करके इंपोर्ट दूसरे और फाइल में एक्सपोर्ट। नीड import। टू एक्सपोर्ट हाँ, ये रहा एंड लोकल। इम्पोर्ट और थर्ड पार्टी मतलब व्हाटएवर पैकेज जो डिपेंडेंसी हम वी हैव। एक्सप्रेस हुआ, मंगूज, एमपीएस पैकेज अल्फा। Package जो externally use करता है, I think. करेक्ट करेक्ट, मतलब जो भी कोई भी बना सकता, थर्ड पार्टी मतलब आप में से भी कोई भी कल एक पैकेज बना सकता है, npm पे डिप्लॉय कर देगा, और आपका पैकेज दूसरे लोग यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो आपने कभी डिप्लॉय किया है पैकेज npm पे डिप्लॉय? नहीं सर। करके देखो एक बार, स्मॉल प्रोसेस है। तो आप भी आप एक आपका खुद की लाइब्रेरी बना के डिप्लॉय कर सकते हो, अदर डेवलपर उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, लाइक दैट। प्रैक्टिस के लिए अभी बनाओ। अभी इंटेंशनली आप लोग ऐसा सोच नहीं सकते कि क्या प्रॉब्लम है इस पे मैं लाइब्रेरी बनाऊं। ऐसा भी नहीं होगा इस स्टेज पे, ठीक है? बट एज अ प्रैक्टिस आप बना सकते हो कोई भी एक लाइब्रेरी। हाँ सर। सर आपने वो प्रॉमिस डॉट ऑल का क्या बताया था? हाँ, ये देखो, ये टाइप्स है प्रॉमिस के, जैसे मैंने बोला था। मेथड्स वी कैन से promise डॉट ऑल, promise डॉट ऑल सेटल, promise डॉट एनियन, promise डॉट रेस्ट। ठीक है, तो इस पे थोड़ा पढ़ो। promise डॉट ऑल मतलब क्या है? मल्टीपल, एक से ज्यादा प्रोमिस अपन कर रहे हैं रन, ठीक है? तो उस प्रॉमिस को कैसे इवोल्वेट करेंगे, उसके लिए रहता है promise डॉट ऑल। मतलब सभी प्रॉमिस। और promise डॉट ऑल मतलब क्या? सपोज एक 10 प्रॉमिस में रन कर रहा हूँ,
सभी प्रॉमिस अगर मेरे फुलफिल हो गए तभी सभी सबका एग्जीक्यूशन होगा। अगर 10 में से एक भी रिजेक्ट हो गया तो सब रिजेक्ट हो जाएगा। और ये प्रॉमिस डॉट एनी, प्रॉमिस डॉट रेस, तो इसका एक बार थोड़ा पढ़ो डिटेल में। ज्यादा हार्ड नहीं है ये चीज, लेकिन अगर पूछेगा इंटरव्यू तो बताना ना चाहिए आप लोग। चलिए प्रोमिसेस आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं थोड़ा। कंट्रोल गोज बैक टू द रेज्यूमे एग्जीक्यूशन। हाँ कोई इशू नहीं, देखो इसके लिंक पे ही सब एग्जांपल मिलेंगे अपने को तो। अभी देखो मैं जैसे कि मैंने बोला था प्रॉमिस डॉट ऑल, मेरे पास तीन प्रॉमिस है यहाँ पे। देखो इस एग्जांपल में 1 2 3 तीन वेरिएबल में, ठीक है। तीन प्रॉमिस मुझे रन करने एट ए सिंगल टाइम। कैसे रन करूंगा मैं? प्रॉमिस डॉट ऑल और तीनों को मैं सब भेज दूंगा उसको एक एरे में, फिर डॉट देन और डू भी आपका डॉट केच, जो भी वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये रहेगा आपका प्रॉमिस ऑल। प्रॉमिस ऑल सेटल में भी सेम रहता है, तीन वेरिएबल है, ऑल सेटल कर दो, यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये कैसा रिजेक्ट करे डेटा देगा आपको? फुलफिल्ड रिजेक्टेड लाइक दैट, ऐसा आपको ये डेटा दे देगा। प्रॉमिस डॉट रेस क्या करेगा? सपोज दोनों प्रॉमिस है, दोनों में से कौन सा प्रॉमिस जल्दी एग्जीक्यूट होगा? रेस मतलब क्या? रेस मतलब क्या है यार? वो बाइक रेस लगाते हो आप लोग, जो जीता वही, जो पहले जीता वो विनर। यहाँ यहीं पे भी ऐसा ही है। रेस रेस मतलब दो प्रॉमिस एक साथ चला दो, जो पहले जीतेगा उसको प्रिंट कर दो। प्रॉमिस डॉट रेस। जो जीता उसका हाँ जो जीता वही से सिकंदर। ये रहता है प्रॉमिस डॉट रेस। और ये प्रॉमिस डॉट एनी का क्या टाइप है ना? चलो अभी तीन प्रॉमिस है यहाँ पे, ठीक है। तीनों में से अगर कोई भी एक प्रॉमिस जल्दी रन होगा, तीन प्रॉमिस का रिजल्ट शायद सेम ही होगा इन शॉर्ट, ठीक है, लेकिन अपने को देखना क्या है, कौन सा जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी का डेटा अपन इधर दे देंगे प्रॉमिस डॉट एनी। तो ऐसे इसके चार मेथड्स है, थोड़ा रीड कर लेना इसके बारे में। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ चैट में, तो हम लोग भी रीड कर पाओगे सेपरेटली। अच्छा सर, वो जैसे जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन में ही पूछा था कि प्रोमिसिफाई, तो वो जब भी सर्च करा तो वो नोड जेएस का ही आया। तो हाँ जावास्क्रिप्ट में तो इनके है ना अंदर ही कोई? मॉड्यूल है ना, ठीक है, एक मिनट आपको वो भी दिखा दूँ। हाँ, तो मतलब ये पूछ रहा था कि वो जावास्क्रिप्ट में तो नहीं है प्रोमिसिफाई, प्रोमिस ही है। Promissify, see, in Promissify in the हाँ, तो वो नोड जेएस का मॉड्यूल ही खुला वो जब भी यूटिल करके। देखो util डॉट प्रोमिसिफाई, उसके अंदर एक इनबिल्ट मेथड है, आपको वही बताना है उनको। प्रोमिसिफाई बोलिए जो भी, जब भी आपको पूछा जाएगा, util के अंदर एक इनबिल्ट पैकेज मेथड है, हाँ वो util डॉट प्रोमिसिफाई। या अच्छा, अगर वो जो प्रोमिसिफाई पूछेगा तो मतलब वो नोड जेएस का पूछ रहा है ना सर? राइट। ओके, देखो नोड ये जेएस किस पे रन कर रहे हैं ना, एट द एंड जावास्क्रिप्ट पे ही रन कर रहे हैं नोड जेएस, हाँ बराबर। ऐसा हाँ, क्वेश्चन कभी नहीं रहता कि प्रोमिसिफाई पूछा या प्रॉमिस पूछा तो नोड पे होगा, नोड ये जेएस इस नोड जेएस का, हाँ तभी एक दूसरे से लिंक ही है वो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल सेग्रीगेट सर। मत करो, ये क्वेश्चन इसका ये उसका। अभी नोड का क्वेश्चन मैं ये समझ सकता हूँ कि नोड जेएस में कौन सी मेथड्स है, राइट, एपीआई कॉल करने के लिए एपीआई के राउटर क्या है, ये नोड के फंक्शंस है। लेकिन प्रॉमिस, क्या आस्किंग, अवेट, ये सब जावास्क्रिप्ट का ही तो है, ये बस यूज कर रहे हैं ये नोड वाला। अच्छा सर, नोड जेएस पे अदर लैंग्वेज भी रन हो सकती है, जैसे पीएच वगैरह, मतलब पीएचपी? पीएचपी वगैरह नहीं नहीं यार, हाँ, नोड जेएस बनाम में नाम में ही लिखा है ना नोड, आफ्टर दैट जेएस जावास्क्रिप्ट पे ही रन करेगी या फिर टाइप स्क्रिप्ट पे रन करेगी अपार्ट फ्रॉम दैट। सर ये जो नोड जेएस में जो इवेंट लूप है और जो जावा स्क्रिप्ट में इवेंट लूप है, बिल्कुल एक ही चीज है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। नोड का इवेंट लूप और इसका इवेंट लूप में क्या डिफरेंस है बताओ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि कोई डिफरेंस है कि भी या नहीं है। हाँ, आप लोग बताओ ना, किसको पता है ये डिफरेंस? तो मुझे तो लगता है एक ही चीज है। कुछ माइनर डिफरेंस है उसमें? शायद देखा तो था कहीं ही मेमोरी वगैरह। क्या डिफरेंस है बताओ, या आप लोगों ने पढ़ा ना सब डिटेल में? हाँ, आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, अच्छा। यस इवेंट ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा डिफरेंस। ये सर आई थिंक उसमें माइक्रो टास्क क्यू भी सब भी रहता है नोट जेएस में। हाँ नॉर्मल चेंज है। हाँ ठीक। और थ्रेडफुल एंड ऑल आई थिंक। हम्म।
देखो क्या है ना, जैसे सब दोनों साइड में थ्रेड वगैरह रहता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप कैसे काम करता है? प्रोग्राम डजंट टर्मिनेट व्हेन द नो पेंडिंग टास्क इन द जावास्क्रिप्ट लूप। जावास्क्रिप्ट का जो लूप है, अगर उसमें कोई पेंडिंग टास्क ही नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए बराबर, कोई भी लूप। लेकिन जेएस का लूप वैसा टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन नोड का लूप कैसा होता है? नोड टर्मिनेट द प्रोग्राम व्हेनेवर देयर आर नो पेंडिंग टास्क हैंडल्ड बाय द इवेंट लूप। तो नोड थोड़ा एडवांस लेवल का है। कैसा है? जावास्क्रिप्ट में कैसा है, लूप घूम रहा है तो घूमने दो, मतलब टास्क है हो या ना हो, आ गए टास्क लूप में तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं है तो भी लूप घूमता ही रहेगा। नोड का वैसा नहीं है, टास्क नहीं है तो मैं खाली फुकट घूमूंगा नहीं, मैं टर्मिनेट कर दूंगा खुद को। तो ये ऐसे मतलब बहुत ही माइनर माइनर डिफरेंसेस है दोनों के चेंज लूप में। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट लूप। तो ये मतलब यही एक मेजर डिफरेंस लगता है इसमें, उसके अलावा कुछ है नहीं। और एक थ्रेड वाला एक देख लेते हैं अपन। बस आप ये दो डॉक्यूमेंट पढ़ लो, इसके लिए खत्म। डिटेल में पढ़ो। अगर एक हार्ड लेवल का इंटरव्यू हो गया तो पूछ सकते हैं। आपको किसी ने पूछा था क्या अभी तक इंटरव्यू में ये सवाल? नहीं सर, कंफ्यूजन होती है कोई ये। सर क्वेश्चन नहीं ये पूछते कि इवेंट लूप इन नोड जेएस, तो हमें तो लगता है जावास्क्रिप्ट के ही पूछ रहा है, एक ही बात है। देखो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, जैसे मैंने बोला अभी ये वाला एग्जीक्यूशन टाइम वाला। सो इवेंट लूप नोड जेएस में क्या कैसा आंसर देते हो आप, ये बताओ मुझे। क्या क्या बताते हो उस क्वेश्चन में, इवेंट लूप के क्वेश्चन में? सी, जब भी डेवलपर या भी जो भी इंटरव्यूअर है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना व्हाट इज इवेंट लूप, तो वो कभी आपको जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप नहीं पूछेगा, नोड का ही पूछेगा। अब तक सर क्या इसको आपके स्टार्टिंग से बता दीजिए कैसे वर्क करता है, वो होता सर क्या है। इवेंट लूप तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ सर कि जावास्क्रिप्ट के पास एक ही एग्जीक्यूशन स्टैक होता है, राइट राइट सर, कॉल स्टैक। या तो वन बाय वन करके सारे कॉल मतलब फंक्शन या जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो वन बाय वन करके कॉल स्टैक में जाती है। बट करेक्ट। कभी जब कभी एग्जीक्यूशन जैसे असिंक्रोनस वाली या टाइम टेकन क्वेरी वगैरह आ गई तो वो हाँ डायरेक्ट नहीं जाती, क्योंकि उसके पास कॉल बैक या मतलब जो भी है फंक्शन अदर फंक्शन उसके पास होते हैं, तो या टाइमर लगा होता है तो वो अदर अलग जगह लोकल मेमोरी में स्टोर होता है, राइट। राइट उसके सी। बाद वो कॉल बैक क्यू से होते हुए जाता है। बट अगर करेक्ट। वहां पे भी दो दो ऑप्शन है अपने पास, कॉल बैक क्यू और एक माइक्रो टास्क। सो प्रॉमिस बेस्ड जितने भी होते हैं वो उनको प्रायोरिटी दी जाती है कॉल बैक कॉल स्टैक में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम्म माइक्रो टास्क से जो प्रॉमिस बेस्ड वाले जो फंक्शन होंगे वो पहले जाएंगे कॉल कॉल बैक कॉल स्टैक में, एंड हम्म इसके बाद कॉल बैक क्यू में जो भी नॉर्मल फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन पड़े होंगे वो जाएंगे। करेक्ट। तो वही प्रोसेस है जो आपने बोला, ये तो इवेंट लूप देखो। का प्रोसेस है। करेक्ट करेक्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना सब रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इवेंट लूप क्या करेगा, एक एक रिक्वेस्ट को पुल करेगा इधर से, ठीक है। फिर पुल करने के बाद वो देखेगा हर एक रिक्वेस्ट को क्या चाहिए एक्चुअली। किस रिक्वेस्ट को डेटाबेस से डेटा लेकर आना है, किस रिक्वेस्ट को फाइल रीड करना है, जो भी है रिक्वेस्ट। तो हर एक रिक्वेस्ट को वो एक एक थ्रेड असाइन करेगा, स्मॉल स्मॉल थ्रेड। तो हर एक थ्रेड क्या करेगा, जाएगा उसका जॉब करके आएगा वापस इवेंट लूप के पास। तो उसको उस थ्रेड आ रहे, सपोज एक थ्रेड को मैं इवेंट लूप ने बोला डेटाबेस से डेटा लेकर आ, वो लेकर आ गया डेटा। तो इवेंट लूप क्या करेगा, उस डेटा को कलेक्ट करेगा और जहां से रिक्वेस्ट आ रही है आई थी उस थ्रेड के लिए, तो उस रिक्वेस्ट को डेटा सेंड कर देगा वापस। तो एज ए रेस्पॉन्स वो डेटा जो भी आया है डेटाबेस से आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इतनी सारी रिक्वेस्ट है ना, जितनी भी रिक्वेस्ट है इवेंट लूप तो घूमता रहता है, हर बार वो रिक्वेस्ट बस उठा ही रहा है क्यू से। लेकिन रिक्वेस्ट उठाने के बाद उसके पास थ्रेड मैनेजमेंट है, थ्रेड पुल है। हर एक रिक्वेस्ट को एक थ्रेड में डिवाइड करके छोड़ रहा है, फिर थ्रेड उसका काम करके वापस आ जाएगा। तो ये रहता है इवेंट लूप का फंक्शन। तो इवेंट लूप का काम क्या है, रिक्वेस्ट ले लो थ्रेड में बांट दो, थ्रेड से आउटपुट ले लो, रेस्पॉन्स को दे दो, रिक्वेस्ट को दे दो जहां से भी आ रही है। ये जो सर्कुलेशन है। तो इनपुट थ्रेड है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है वो एक सिंगल है, उसके बाद वो मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, उसके बाद वो मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि अभी देखो थ्रेड क्या रहता और है। सर अगर जैसे मान लो सर एक जैसे लगातार 1000 रिक्वेस्ट आई,
और एक रिक्वेस्ट को आने मतलब एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वापस सेंड करने में, रिस्पॉन्स सेंड करने में मान लो 1 सेकंड लगा है। एक और सेकंड बहुत जो ज्यादा बोल टोटल दिया आपने, 1000 मिली सेकंड। एग्जाम्पल सुनो हाँ सुनो हाँ सुनो। ओके। 1000 जो रिक्वेस्ट आ रही थी ना, उनको टोटल रिक्वेस्ट को इनपुट होने में मान लो 5 सेकंड लगा है टोटल को, 1000 को। हाँ और हाँ एक रिस्पॉन्स भेजने में उसको 1 ही सेकंड लगता है। तो ओके। पहले क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट इनपुट में आएंगी या फिर पहले जो पहली आई थी उसका रिजल्ट आएगा? नहीं नहीं वैसा नहीं होगा। देखो इवेंट लूप क्या करता है, पैरेलली रन कर रहा है। थ्रेड पुल का काम क्या है, जाएगा उसको रन करेगा। अभी मान लो दो थ्रेड पुल है, T1 T2, ठीक है। T1 पहले आया था, उसको लग रहे 5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद T2 आया, T2 को लग रहे 2 सेकंड। तो T1 गया, उसका 5 सेकंड का काम चल रहा है। T2 तो बाद में आया था, लेकिन वो भी रन हो रहा है ना पैरेलली। T2 2 सेकंड में डेटा लेकर वापस आएगा इवेंट लूप के पास। तो इवेंट लूप ऐसा नहीं बोलेगा भाई तू पहले कैसे आ गया, मैंने तो T1 को पहले भेजा था, ऐसा नहीं होता। T2 क्या करेगा, उसका डेटा लेके भेज देगा फटाक से, जिस देर से रिक्वेस्ट आई है वहां। फिर T1 3 सेकंड के बाद आएगा, उसको फिर उसको बाद में भेजेगा। ऐसा नहीं रहता है कि कौन पहले आया, किसको पहले भेजना है, लाइक दैट। तो तो ऐसा कुछ सर नहीं। क्यू की प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता है क्या? क्यू क्यू की प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे इवेंट क्यू की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है, इस लाइन पे आप देख रहे हो। यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लेकिन जब वो लूप पे एग्जीक्यूट होके थ्रेड बनेगा ना उसका, T1 T2 T3, ये यस। थ्रेड थोड़ी क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, आप समझ नो। रहे हो। यस थ्रेड यस। तो उसका काम क्या है, काम करके वापस आएगा लूप के पास, फिर लूप यस। उसको बाद में भेजेगा। तो क्यू का काम यहीं पे खत्म हो रहा है। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होगी, बट यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर? सर सर्वर जो है इसके पास अरे यार रिक्वेस्ट आपका भेजता है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। हेलो सर, मैं कह रहा हूँ जब सर्वर डेटा के पास तो क्यू को फॉलो करता है, लेकिन रिस्पॉन्स आता है जब आप तब वो क्यू को फॉलो थ्रेड नहीं थ्रेड की, हाँ राइट, वो थ्रेड देता है वापस, करेक्ट। थ्रेड में वो होता है। हाँ राइट राइट। So this is how your this event loop will get executed. सर एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए वो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस और इनपुट आउटपुट बाउंड वाला जो ब्लॉकिंग। सिंक्रोनस कौन सा हाँ, वाला? फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपने जो स्लाइड में बता रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे रे? वो स्लाइड ओपन कीजिए जहाँ पे आप मतलब पढ़ा रहे हैं। ओके हाँ हाँ। हाँ उसमें जो पहला ऊपर लीजिए। नहीं नहीं ये नहीं, वो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाला। ये वाला। हाँ, सिंगल थ्रेड सी- नॉन ब्लॉकिंग वाला। हाँ देखो सिंगल थ्रेडेड है, अपने को पता है, उसके बेस पे ही नोड.js बना हुआ है, राइट। सिंगल थ्रेडेड। नॉन ब्लॉकिंग मतलब क्या है, किसी और के लिए खुद को ये ब्लॉक नहीं करेगा। नॉन ब्लॉकिंग मीन्स व्हाट, देखो अभी आपका डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस पे आपने एक क्वेरी फायर कर दी, तो इसका ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप दूसरी क्वेरी फायर नहीं कर सकते। आप कर सकते हो बराबर, ये नंबर्स ऑफ द क्वेरी यू कैन फायर ऑन द डेटाबेस। ठीक अब है। आपका जो भी फ्रेमवर्क है नोड एक्सप्रेस उसके साथ। सो दैट इज मीन व्हाट, इट इज नॉन ब्लॉकिंग। ऐसा नहीं है कि एक क्वेरी गई है तो वो डेटा लेकर आएगी फिर ही दूसरी जाएगी, ऐसा कोई नहीं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब ठीक है। उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, मतलब आप कितनी मल्टीपल कॉल्स लगा सकते हैं। हाँ हाँ, मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ब्लॉक नहीं हो रहा है, इसलिए तो फेमस है ना। अगर ऐसा ब्लॉक हो रहा होगा तो कौन यूज करेगा फिर उसको। और ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाले में असिंक्रोनस मीन्स व्हाट, सी आपने 10 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। आपकी पांचवी मतलब लाइन। डिपेंड कैसे करता है सर कि वो पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सिंक्रोनस में तो लाइन बाय लाइन ही होगा, राइट। हाँ और हाँ। सिंक्रोनस में मल्टीपल लाइन या टाइम टेकन वाली चीज जाएंगी। तो वो हम्म। डिपेंड करता है कि किस में ज्यादा टाइम लगता है और किस में कम लगता है, तो वो कैसे हाँ अज्यूम हाँ, होता है। वो असिंक्रोनस एज्यूम करता है। सी असिंक्रोनस का क्या रहता है नेचर, वो पहली लाइन पढ़ेगा, इमिडिएटली एग्जीक्यूट हो रही है विद इन पॉइंट सम मिली सेकेंड, इमिडिएटली एग्जीक्यूट हो रही है तो करेगा एग्जीक्यूट, आगे जाएगा। फिर तीसरी लाइन पे जाएगा, चौथी लाइन को अभी उसको लग रहा है कि इसको मिली सेकेंड ज्यादा लग रहा है एग्जीक्यूट करने को। फिर वो क्या करेगा, वो एक थ्रेड बनाएगा ना, उसका थ्रेड जैसा अपन देखा इवेंट लूप में। फिर वो उसको एक थ्रेड असाइन करेगा, थ्रेड जाके डेटा लेके आएगा, जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करेगा। फिर वो असिंक्रोनस नेचर क्या करेगा, लाइन नंबर 5 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। फिर जैसे एट द एंड जब वो थ्रेड एग्जीक्यूट होगा लाइन नंबर 4 का, तब वो डेटा वापस लेकर आएगा। ऐसा काम करता है असिंक्रोनस। बाकी एग्जीक्यूशन मतलब पैरेलल चलते रहेंगे। हाँ बाकी सब पैरेलल चलता रहेगा, और जब उसका डेटा आएगा एट द एंड फिर उसको लेकर बैठेगा। लेकिन ऐसा रहता है ना, कभी कभी लाइन नंबर 4 पे अब अभी मैंने एक डेटाबेस पे क्वेरी लिख दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
लाइन नंबर 4 वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ही मुझे 5 पे जाना है। ऐसा होता है, बड़े बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी केसेस में ऐसा होता है। तो उस टाइम मुझे क्या बनाना पड़ेगा उसको? प्रॉमिस बेस्ड बनाना पड़ेगा। करेक्ट, उसको सिंक्रोनस बनाना पड़ेगा विद द हेल्प सिंक्रोनस ऑफ द बनाना प्रॉमिस पड़ेगा। और असिंक ऑफ इट। तो ये रहता है डिफरेंस उस दोनों में। ठीक है सर सर, थैंक यू। और थोड़ा सा बता देते हैं कि एट द सेम टाइम अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट मिल रहे हैं तो हम्म, उसको हैंडल करता है। उसको कैसे हैंडल कर रहा है नोड जैसे सा? At a time t, हम्म, when multiple requests has comes, so how Node.js handle this, or how JavaScript see, handle this? see how it will handle. See, this is Hmm. my event queue. In this event queue there are 1,000 requests. Suppose Yes. 1,000 requests. Okay, event loop, what it will do, as the queue property, it will fetch all the requests from this queue. Okay, and Okay. each and every request it will assign one thread t1 t2, this n numbers of the thread it will assign. Each Yes. and every thread, see, this is my thread pool. You can see 1 2 3 4, these are the Yes. thread something. One thread want database, second thread want file system. So what this thread will do, it will go in the database, check the data, it will come back. And once it came back, event loop have all the track. If for this thread belongs from which request, all the Okay. track event loop have here. Then what event loop will do, it will take that result and it will pass that result with the help of that request. Simple. Okay. Okay, sir. Thank you. तो सर इसका मतलब हम आंसर में ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड पूल, इट विल करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। सी, आंसर में आप ऐसा बोल सकते हो कि whenever event loop is getting executed, it will pull all those requests from the event queue, and each and every request it will assign one thread, and that thread will get executed as per the requirement. Simple. थैंक यू सर। हेलो सर। Yes. हाँ सर, अगर हाँ, उसे फोर्थ लाइन में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसे एक थ्रेड असाइन करेगा वो, ठीक है। करेक्ट, असाइन उसके करने थ्रेड के असाइन बाद, करें। हाँ, असाइन करने के बाद वो कोड अगर नीचे एग्जीक्यूट होते चले जाएगा, वो अगर वो छठी लाइन पे गया है, ठीक है, छठी लाइन पे गया जाने के बाद उसे उसने जो असाइन किया था वो थ्रेड का इनपुट, मतलब उसका आउटपुट उसे मिल गया, तो वो जो आउटपुट है वो फोर्थ लाइन पे मतलब स्टेबल होगा या सिक्स लाइन के बाद आएगा? 6 लाइन के बाद आएगा। एग्जीक्यूशन फोर्थ को हुआ, लेकिन रिजल्ट कब मिल रहा है, थोड़ा लेट मिल रहा है ना, तो उसके लेट ही वो प्रिंट होगा। ओके ओके। तो इसलिए तो सिंक्रोनस बनाना है ना। अगर उसी लाइन पे रिजल्ट चाहिए तो सिंक्रोनस प्रॉमिस का वेट लगा दो, नहीं चाहिए तो बाद में ले लो, ऐसा। हेलो सर। यस। सर जो हम हमारे पास कुछ चार HTTP रिक्वेस्ट होती है, पुट, पोस्ट, गेट एंड डिलीट। ओके। सर हम ये सब काम हम पोस्ट से भी कर सकते हैं, तो हम बाकी के HTTP रिक्वेस्ट क्यों यूज करते हैं? हाँ, पोस्ट से भी कर सकते हैं अपन से। अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो, राइट, तो नोड.जेएस फ्रेमवर्क कंफर्टेबल बन जाता है कि आपने कुछ तो इंसर्ट करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो उस मेथड की वजह से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। अगर पुट करना है, अभी कुछ डेटा अपडेट ही करना है, तो पुट यूज करो, क्योंकि उसके हिसाब से अपना जो एपीआई है ना वर्किंग करना शुरू कर देगा। उसकी वजह से उसका स्पीड है ना थोड़ा इंप्रूव होगा सम मिली सेकेंड। गेट के रिक्वेस्ट, गेट मतलब कम टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये जो मेथड्स है ना उस एपीआई रिक्वेस्ट को स्पीडली और कंपेटेबल बनाने के लिए बनी हुई है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट ही यूज करो, पोस्ट से सब होता है, लेकिन मत करो वैसा। सर। ओके सर। यस। सर एक बार बता दो कि जो इवेंट लूप है नोड.जेएस और इवेंट लूप है जावास्क्रिप्ट में कैसी डिफरेंस क्या है उनका? हाँ, डिफरेंस यही था ना मेजर, अभी दिखाया था ना मैंने गूगल का आपको। सर देखो, ये एक जो दो। थ्रेड है ना, देखो ये है मेरा सपोज इवेंट लूप है नोड का, ठीक है। यहाँ पे एक थ्रेड पूल है, हाँ जावास्क्रिप्ट में भी एक थ्रेड है वहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्रेड पूल हाँ क्या करता हाँ है ना, अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है तो खुद को बंद कर देगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो हाँ। जावास्क्रिप्ट का जो थ्रेड पूल है ना, वो क्या करेगा, जैसे अगर उसके पास रिक्वेस्ट नहीं भी है तो भी वो उसको ओपन रखेगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा वो। उसको वजह से थोड़ा अच्छा। लैग मारता है परफॉर्मेंस में, तो नोड.जेएस में वो इम्प्रूवमेंट हो गई है। सर इसमें एक और मुझे डिफरेंस दिख रहा है। हम्म, जावास्क्रिप्ट में तो हम कॉल स्टैक होता है, मतलब हाँ फर्स्ट इन लास्ट आउट ऐसे वाला, और इसमें तो हाँ इवेंट क्यों है, फर्स्ट इन हाँ फर्स्ट आउट, ये भी डिफरेंस है। हाँ, ये भी नॉर्मल डिफरेंस है। स्टैक स्टैक इधर भी लगता है अपने को, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में। सर वो तो जावास्क्रिप्ट के भी इवेंट लूप में क्यू की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो।
हाँ वहां क्यू पे भी वहां बोल पे भी सकते हैं ना कि कॉल स्टैक है और स्टैक की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। करेक्ट। तो यही मेजर डिफरेंस ये है कि थ्रेड क्लोज नहीं हुआ एट ए टाइम, यही मेजर डिफरेंस है। बाकी क्यू तो दोनों तरफ लगेगा, इवेंट लूप दोनों तरफ है, थ्रेड दोनों तरफ है, उसका कोई इशू नहीं। तो और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में तो मैंने आपको 2 लिंक दे दिए चैट बॉक्स, तो आप उसमें हाँ डिप सर। जाओ थोड़ा, ठीक है। ओके सर। सर डॉम के बारे में बताओ ना ओके थोड़ा, देन मतलब। wrap up. हेलो सर। Actually time is running, I need to join one more session, so we will take this as a last question. क्या बताना है डॉम के बारे में? डॉम का तो एक एग्जांपल ले लिया ना। यहाँ पे देखो डॉम का काम क्या है, जो भी HTML में डेटा अपन दे रहे हैं ना, वो डेटा HTML का डेटा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में चाहिए अपने को, ठीक है। और ये डेटा जो है ना HTML जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का डेटा अपन इधर भी दिखा सकते हैं। इसी को डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, सिंपल। तो इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा मिल रहा है मुझे, राइट। तो ये क्या हो रहा है, डॉम मैनिपुलेशन कर रहा सर है। आपका सर स्क्रीन योर शेयर स्क्रीन नहीं इज है। नॉट शेयर। Screen is not visible. इसको स्टॉप कर दिया मैंने, 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में अपन ने देखा है जावास्क्रिप्ट का HTML कोड है मेरा, राइट। यहाँ पे जो ईमेल आईडी पासवर्ड है जो भी यूजर एंटर करेगा वो डेटा मुझे कहाँ चाहिए, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में चाहिए। फिर मैं उसको एक्सयूएस या एजेक्स जो भी है लगा के डेटा बैकएंड को भेज सकता हूँ। वो सब डेटा चाहिए मुझे। इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज डॉम। तो यहाँ पे जो भी मैं यूजर आईडी पासवर्ड ईमेल जो भी लिखूंगा, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डेटा बस सिंपली मुझे एक एपीआई कॉल करके भेज देना है बैकएंड को। तो यही काम है जावास्क्रिप्ट के डॉम का। तो ये सब काम करने के लिए डॉम के अंदर मेथड्स है, राइट। गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, इवेंट लिस्टनर, ये सब मेथड्स है उसके अंदर। सिंपल है डॉम। क्लियर नाउ डॉम? हाँ ओके सर सर। क्लियर है। थैंक यू सर।